Good day, dear students. Today we are going to go with our lecture number 19 of Total Quality Management. Now, as I have told you before, that all our lectures are a continuation of the previous lecture. So we take one topic and then maybe it's not possible to speak about one particular whole topic altogether in one lecture. So we then divide it and then continue on in the next one. So in this factor, we were speaking about in our previous lecture of why focus on quality. So we were speaking about कि quality जो है वो हर इंसान का perception quality का वो different होता है, हर इंसान का concept quality का वो different आ जाता है, and वो quality को उसी नज़र से वो maybe judge करते हैं. So one way to understand quality as a consumer-driven concept is to consider the example of eating at a restaurant. So एक तरीके से हम अगर quality को understand करते हैं तो एक consumer-driven concept जो है वो ये है कि it's to consider कि the example जो है of eating at a restaurant, एक restaurant पे खाने का हम उसमें हम देख सकते हैं कि एक consumer-driven concept of quality क्या हो सकता है. So how will you judge the quality of a restaurant? आप restaurant की quality किस point से judge करेंगे? Now most people apply such criteria as the following. So ज़्यादातर लोग जो है वो इस criteria को basically एक restaurant को judge करेंगे कि या तो उसकी service अच्छी हो, ठीक है, उसको response time अच्छा हो, food preparation उसकी ठीक हो, environment and atmosphere अच्छा हो, price ठीक हो और selection. So some people would judge that service, response time, food preparation, environment, atmosphere, price and selection ये एक important factors हैं किसी भी restaurant को judge करने के लिए. Now, but it doesn't mean that everybody would have the same concept of judging quality or judging a restaurant's quality on these bases. So the examples get one aspect of quality, the results expect. So in example से at least जो है एक aspect जो है वो आ जाता है quality का जिससे result जो है वो result aspect आप देख सकते हो. So does the product or service meet or exceed customer expectations? So क्या वो product or service जो है वो customer expectations को meet कर रहा है या exceed कर रहा है उससे, ठीक है? So this is a critical aspect of quality, but it is not the only one. So ये critical aspect ज़रूर है quality का, but लेकिन not the only aspect of quality. So total quality we would say is a much broader concept than encompasses not just the result aspect but also the quality of people and the quality of processes. So हम ये judge कर सकते हैं कि सिर्फ एक quality को अगर हमने judge करना है तो ये सिर्फ जो है ना एक critical aspect नहीं है quality का, but हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हाँ total quality जो है ना एक broader concept है, ठीक है, उसमें ना सिर्फ रिजल्ट्स जो है उनका एस्पेक्ट आता है बट इवन के क्वालिटी जो लोगों की क्वालिटी है या क्वालिटी प्रोसेसेस हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व आ जाते हैं. So when we say that how is total quality different, so quality से total quality हम किस तरीके से कहेंगे कि different होगा. So what distinguishes the total quality approach from traditional ways of doing business can be found in how it is achieved. So अगर हम डिस्टिंग्विश करें टोटल क्वालिटी अप्रोच को ट्रेडिशनल तरीके जो है क्वालिटी जज करने के लिए और मे बी ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हम ये जज कर सकते हैं कि इट कैन बी फाउंड दैट क्वालिटी किस तरीके से अचीव की गई है. नाउ द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी टोटल क्वालिटी आर दीज दैट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो वो टोटल क्वालिटी की ये होंगी कि कस्टमर फोकस जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वो क्या है, obsession with quality, quality के obsession क्या है, then use of scientific approach in decision making and problem solving, और ऐसा scientific approach जो है वो decision making and problem solving में use हो, long term commitment and team work जो है वो consider हो.
So how is total quality different? How can we say that total quality is different? So employee involvement and empowerment, total quality में ये चीज़ें different आ जाती हैं कि इसमें जो है employees की involvement और empowerment उसको ज़्यादा दी जाती है. Continual process of improvement चलता है, ठीक है. It's like a constant process of improvement कि आपके improvement होती जाती है step by step. Then bottom up education and training, ठीक है, नीचे से ऊपर लेवल तक जो है ना education और training दी जाती है. Freedom through control के through freedom है, and unity of purpose, all deliberately aimed at supporting the organizational strategy. और unity of purpose जो है वो और सारी चीज़ें जो है ना वो deliberately aimed हों ताकि वो organization support कर सके organizational strategy को. So each of these characteristics is explained later in this chapter. So हमने इन सारे factors को जो है further हम इसमें आपको explain करेंगे. Now, when we look at the historic development of total quality, अगर हम historic development judge करें total quality की, so the total quality movement had its roots in the time and motion studies conducted by Frederick Taylor in 1920s. So total quality movement को अगर हम जज करते हैं तो total quality movement जो है उसकी roots जो थी ना वो ख़ास तौर पे motion studies में वो Frederick Taylor ने 1920s में start कर दी थी. So Taylor is now known as the father of scientific management. और Frederick Taylor को अब हम आजकल के दौर में हम कहते हैं कि वो scientific management का he was the father of it. उसने यानी इस चीज़ के major role play किया या इजाद करने में इसको. So the most fundamental aspect of scientific management was the separation of planning and execution. So सबसे ज़्यादा fundamental aspect जो था scientific management का वो था separation था planning और execution का, इन दोनों चीज़ों को separate करना. That was the important part in it. So although the division of labor spawned tremendous leaps forward in productivity, it virtually eliminated the old concept of craftsmanship in which one highly skilled individual performed all the tasks required to produce a quality product. So अगर हम ये जज करते हैं कि फंडामेंटल एस्पेक्ट जो था साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो प्लानिंग और एक्सिक्यूशन को अलग अलग नज़र से देखना था और उनको अलग करना था. सो इवन दो कि हमने लेबर की डिवीजन जो है वो ट्रिमेंडस लीप लिया उसमें करने में एंड प्रोडक्टिविटी में फॉरवर्ड गए हैं, इट वर्चुअली एलिमिनेटेड द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप इन विच वन हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल परफॉर्म्ड ऑल द टास्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी प्रोडक्ट. और उस वक्त लेकिन उससे ये चीज़ हुई है कि उसने वर्चुअली ये चीज़ ख़त्म कर दी कि एक जो पुराना कॉन्सेप्ट था कारीगर का, किसी के कोई एक कारीगर या क्राफ्ट्समैनशिप जो है किसी के अंदर कोई हुनर था और वो कोई एक स्किल्ड पर्सन जो हुनरमंद था या कोई कारीगर था किसी स्पेशल चीज़ का, ठीक है, वो सारे टास्क पूरे करता था एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी यानी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए. सो पुराने कॉन्सेप्ट को वो ये चीज़ ये ख़त्म कर देता है डेवलपमेंट जो है टोटल क्वालिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब वो दोज production parts are divided into different steps or different यानी basis पे यानी instead of one person performing and producing a product अब बहुत सारे लोग छोटे छोटे उसके parts बना के फिर end पे उसका जोड़ के एक result निकलता है, निस्बतन के एक ही बंदा responsible हो उसकी पूरी making के लिए. तो पहले दौर में that used to be like that कि सिर्फ एक ही person एक ही कारीगर एक चीज़ की specialty पे था. So अब labor जो है वो उसने यानी प्रोडक्टिविटी में लीप लिया है एंड अब वो डिवाइड हो गया. सो हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी, अगर हम हिस्टोरिक डेवलपमेंट फिर भी जज करते हैं, सो इन अ सेंस क्राफ्ट्समैन वाज CEO, प्रोडक्शन वर्कर एंड क्वालिटी कंट्रोलर ऑल रोल्ड इन वन पर्सन. सो अगर हम एक कारीगर को पुराने वक्तों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो वो अपने खुद ही CEO भी था, ठीक है, प्रोडक्शन वर्कर भी था, क्वालिटी कंट्रोलर भी था, वो सारा एक पर्सन के अंदर रोल अप होके आ गया था, यानी ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल थिंग. सो
टेलर ने जो है जब अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिस्टम डेवलप किया, सो ही डिड अवे विद दिस बाय मेकिंग प्लानिंग. उसने यानी ये कॉन्सेप्ट जो है ये चेंज कर दिया कि जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का जॉब बना दिया, ठीक है, और प्रोडक्शन जो था वो लेबर की जॉब कर दी. So now to keep quality from falling through the cracks, it was necessary to create a separate quality department. So quality के बजाय कि अब quality maintain रखने के लिए कि वो उसमें यानी cracks ना आए या वो बीच में कहीं miss ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी था कि एक create किया जाए कि एक quality department बनाया जाए. Now, such departments had shaky beginnings, and just who was responsible for quality became a clouded issue. So, start में obviously ये क्वालिटी डिपार्टमेंट्स जो थे दे वर वेरी अनश्योर, यानी उनकी इतनी श्योरिटी उनको यानी क्लैरिटी नहीं थी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है एग्जैक्टली क्वालिटी मेंटेन करने के लिए. तो वो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले दे यूज्ड टू बी अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट, बट नाउ थिंग्स हैव क्लियर्ड अप एंड नाउ एवरीबडी हैज बीन गिवन अ रोल. सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन अ वे गिव्स इंडिविजुअल्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेंटेन क्वालिटी. Now, as the volume and complexity of manufacturing grew, quality became an increasingly difficult issue. So, जो volume और complexity जो है manufacturing की वो बढ़ती गई, ठीक है, quality became an increasingly difficult issue. So, quality जो है वो काफ़ी difficult issue बन गया. So, volume and complexity together gave birth to quality engineering in the 1920s. And reliability engineering in the 1950s. So volume and complexity अगर हम ये देखेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग में आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती गई, ठीक है, एंड क्वालिटी जो था वो काफ़ी ज़्यादा इशू ऐसा हो गया था जो बड़ा इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट हो गया था. सो वॉल्यूम एंड कम्प्लेक्सिटी जो है वो इकट्ठा जो है क्वालिटी इंजीनियरिंग के साथ 1920s में ईजाद हुआ, एंड देन रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग जो था वो 1950s में ईजाद हुआ. सो क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या चीज़ थी? अब क्वालिटी इंजीनियरिंग इन टर्न रिजल्टेड इन द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन द कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, which eventually led to the concepts of control charts and statistical process control, which are now fundamental aspects of the total quality approach. So quality engineering जो थी वो जो 1920s में यानी स्टार्ट हुई वॉल्यूम एंड कम्प्लेक्सिटी के साथ, सो उसमें यानी इट रिजल्टेड इन के स्टेटिस्टिकल मेथड्स जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है यूज़ हों, और उनसे ये चीज़ हुई कि एवेंचुअली इट लेड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स. तो फिर ऑब्वियसली एक कंट्रोल चार्ट्स का प्रोसेस डेवलप होना शुरू हुआ या उसका कॉन्सेप्ट आया. देन एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट भी आ गया. नाउ दीज आर थिंग्स दैट विच आर नाउ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द टोटल क्वालिटी अप्रोच, और ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं टोटल क्वालिटी अप्रोच की. They are very play an important role in total quality management nowadays. ठीक है, so obviously charts have become tools of measuring quality also. So when we speak about now further that total quality management and total organization excellence, so हम अगर total quality management and total organization excellence को अगर हम इकट्ठे देखते हैं, so we would call it that in the 20th century management has been strongly influenced by Taylor's scientific management and Weber's theory of bureaucracy. So traditional management और quality management, अब इसका हम अगर difference देखते हैं तो 20th सेंचुरी में जो है मैनेजमेंट का जो है इट हैज़ बिन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड, उसको बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस मिला, ठीक है, टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट से, ठीक है, एंड वेबर की जो थ्योरी थी ब्यूरोक्रेसी से. सो these approaches have led managers to work within functional hierarchies with their responsibilities divided according to specialized activities such as accounting, marketing, engineering and manufacturing. So ये approaches ऐसे हैं जो उन्होंने managers को उस तरफ लेके गए, ठीक है, to
help them work towards जो है ना एक फंक्शनल तरीके से वो काम कर सके, एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो इस तरीके से डिवाइडेड हों कि उनकी स्पेशलिटी जिसकी जो है, जिसकी जो स्पेशलाइज्ड है जिसमें, उसकी एक्टिविटीज़ उसको उसके मुताबिक मिलें, सच एज जैसे अकाउंटिंग में जो स्पेशलाइज्ड है उनको अकाउंटिंग का ही काम मिले, मार्केटिंग के हैं तो मार्केटिंग उनको मिले, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो उनको उस फील्ड की availability. Economic principles, let's say, for competing in well-defined markets emphasized economies of scale. So, अगर हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स देखते हैं फॉर कंपीटिंग करने के जो है ना इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अगर हम जज करें तो इट इज़ लेट्स से कि इन वेल डिफाइंड मार्केट्स, प्रॉपर वेल डिफाइंड मार्केट्स में अगर हम उनको जज करते हैं तो वो एम्फसाइज की जा सकती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ ना, एफिशिएंसीज, मास प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. सो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो हैं फॉर कंपीटिंग जो है वो वेल डिफाइंड मार्केट्स में जो है वो एम्फसाइज की जाती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी, फिर उनकी मास प्रोडक्शन के ऊपर, और फिर उनकी इनोवेशंस, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो वो लेके आ रहे हैं उसकी बेस के ऊपर आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो. नाउ व्हाइल देयर हैड बिन कॉम्पिटिशन, competitors often played according to a live and let live strategy. So even though कि competitions रहा है इसमें, लेकिन आप competitors को कह सकते हैं कि उन्होंने फिर भी live and let live strategy के हिसाब से जो है वो चलते रहे हैं, because monopolies were precluded by law companies, and they had little incentive to completely drive competitors from the marketplace. So monopolies ऐसे हो गई थी कि उनको preclude कर दिया गया था लॉ, और कंपनीज ने जो है ना उनका इंसेंटिव जो है ना वो उनको मिल गया था कि they had to drive competitors from the marketplace. So अपने marketplace में से अपने competition में लोगों को remove करना था. तो in that point यानी वो strategy जो थी यानी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इक्वालिटी में के एक चीज़ थी कि लिव एंड लेट लिव, यानी हम भी काम कर रहे हैं दूसरे को भी करने दो, एंड ये चीज़ के फिर लेकिन वो पुराना जो है ना मोनोपोलीज ये चीज़ थी कि कंपनीज चाहती थी कि मार्केट से दूसरा कोई कंपटीशन में आए ना. So strategy say it would have been very difficult. So even when new product technologies created new markets such as plastics in the 1950s, management practices changed very little. So even though आप ये देखो कि नई products जो हैं technologies की वो create हुए हैं नए market से, so plastics जिस तरह जो है use हुए early 1950s में, and management practices changed very little. लेकिन plastics में भी जो है वो 1950s में ज़रूर change हुए हैं, लेकिन management practices जो थे वो बिल्कुल भी change नहीं हुए, उसी तरह चलते रहे. So managers set goals for productivity, efficiency and profitability. Using management set goals for productivity, efficiency and profitability, using management by objectives, MBO, to link strategy and operations to the hierarchy. So managers ने जो है ना उस वक्त गोल सेट कर लिए थे प्रोडक्टिविटी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, ठीक है, और जिनसे वो प्रॉफिट ले सकें. यूजिंग मैनेजमेंट सेट गोल्स फॉर प्रोडक्टिविटी, ताकि मैनेजमेंट सेट गोल्स जो थे वो प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ हो सकें, एफिशिएंसी के लिए यूज़ हो सके, एंड प्रॉफिट गेनिंग के लिए भी यूज़ हो सके. एंड यूजिंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBOs जो है, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स उनको भी यूज करना शुरू कर दिया टू लिंक स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस थ्रू द हायरार्की. सो और वो यानी उनको मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को लिंक करना चाह रहे थे स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस के साथ. सो एंड थ्रू द हायर अथॉरिटीज. सो मैनेजर्स मोटिवेटेड एम्प्लॉइज टू फुलफिल दोज गोल्स बाय इंड्यूसमेंट सच एज profit sharing, stock options and bonuses, or other rewards such as job enrichment or participative management. So उस point पे managers ने जो है employees को motivate करते थे through the objectives, या तो अपने goals fulfill करने के,
ادھر بائی ان کو انڈیوس کیا جاتا تھا یا ان کو لالچ دی جاتی تھی پروفٹ شیئرنگ کی, یا تو کہ ان کو پروفٹ میں کوئی حصہ ملے گا, یا ان کو سٹاک خریدنے کے چانسز ملیں گے, یا سٹاک آپشنز ہوں گے, یا بونسز ملیں گے, یا ان کو ریوارڈ جو ہوگا جاب انریچمنٹ یا پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ کی صورت میں ان کو ریوارڈ ملے گا. So, however, the job of management remained much the same. So, even though all of that, management کی جو job تھی وہ پھر بھی same ہی رہی. To set goals, define rules, provide technologies and motivate employees. So, management کے major job factors جو ہے وہ پھر بھی same رہے کہ ان کو goals جو ہے they had to set goals انہیں رکھنے تھے, ٹھیک ہے, ان کو رولز جو ہے لوگوں کے وہ ڈیفائن کرنے تھے, ٹھیک ہے, ان کو ٹیکنالوجیز پرووائڈ کرنی تھی, اور ان کو اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنا تھا. Now, accounting, marketing, engineering and manufacturing practices also did not change. So, accounting اگر آپ دیکھیں یا مارکیٹنگ دیکھیں یا انجینئرنگ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور مینوفیکچرنگ پریکٹسز جو تھے وہ پھر بھی چینج نہیں ہوئے, یعنی اکاؤنٹنگ, مارکیٹنگ, انجینئرنگ, مینوفیکچرنگ چینج نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, وہ بھی سیم رہے, ایون دو کہ چینجز جو ہے نا ٹوٹل کوالٹی کی اور خالی ٹریڈیشنل مینجمنٹ میں دوسری چیزوں چینج ہوئی ہیں. Now, occasionally, new techniques were introduced within the traditional functions such as quality control and manufacturing. So, sometimes جو ہے وہ ایسی نئی ٹیکنیکس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی جاتی تھیں, maybe let's say within traditional functions کے within رہتے ہوئے, جیسے کہ آپ quality control دیکھ سکتے ہو manufacturing میں, that was occasionally like introduced into it. So, but such changes went largely unnoticed by the rest of the organization. اور لیکن ایسی جو تھوڑا بہت چینجز آ بھی گئی تھی کوالٹی کنٹرول کے, جس طرح کی چینجز آئی ہیں, نیو ٹیکنیکس انٹروڈیوس ہوئے, وہ پھر بھی اوور آل جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے اس کو جو ہے نا پراپرلی نوٹس نہیں کیا, اور یعنی وہ ان کو میں بھی شاید وہ چیزیں نظر ہی نہیں آئیں, وہ چینجز نظر ہی نہیں آئیں. So, no one challenged this approach to management as long as it served society well. So, کسی نے اس اپروچ کو چیلنج ہی نہیں کیا جب تک اپروچ جو تھا مینجمنٹ کا, جب تک جو ہے نا یہ سوسائٹی کو صحیح طریقے سے سرو کرتے رہے. Now, while managers in Japan were rewriting the rules of business practice and management and planning to win the world markets by focusing on quality management, US managers continued in the stage of normality. So, even though کہ managers جو تھے جاپان میں انہوں نے ری رائٹ کیا rules of businesses and business practices کو, and they had management انہوں نے کی, and planning to win, let's say کہ ورلڈ مارکیٹس کو انہوں نے ون کرنے کی کوشش کی. سو مینیجرز جو جاپان میں تھے وہ ری رائٹ کر رہے تھے اپنے بزنس پریکٹسز کو اور چینج کر کے آ رہے تھے, اور وہ چینجز جو ہے وہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے حساب سے ٹوٹل کوالٹی کی چینجز لے کے آ رہے تھے اپنے اس میں, کیونکہ وہ مارکیٹ پلیسز کو, ورلڈ مارکیٹ کو مین جو ہے نا ون کرنا چاہ رہے تھے. دے وانٹیڈ ٹو گین مور ابیلٹی ٹو کنٹرول دا ورلڈ مارکیٹ, اور زیادہ وہ فوکس کس چیز پہ کر رہے تھے, کوالٹی مینجمنٹ پہ. سو یو ایس مینیجرز کنٹینیوڈ in the stage of normality. تو اس دوران ایون دو کہ جاپان وہ امپلیمنٹ کر رہا تھا اور ورلڈ مارکیٹ کے اوپر فوکس کر رہا تھا, یو ایس مینیجرز جو تھے وہ اسی نارمل سٹیج میں ٹریڈیشنل مینجمنٹ میں کنٹینیو کرتے رہے. Now the US and Western society in general was focused on another agenda. So US and Western society جو تھا وہ جنرل میں جنرلی وہ ایک کسی اور ایجنڈا پہ فوکس کر رہا تھا, especially the agenda that the Cold War in the 1950s and the 1960s. So Western society جو ہے وہ Cold War کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا تھا جو 50s and 60s میں آئی. Now the stage of replacement, a new paradigm. So when we speak about the stage of replacement as a new paradigm, the stage of replacement means shifting to a new paradigm, یعنی نئی ایک سٹانس پہ یا نئی جگہ پہ. stage of replacement کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ اس پوائنٹ پہ آ کے آپ نئی شفٹ جو ہے نا نئی جگہ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں. So managers must shift to a new paradigm for managing organizations because of the anomalies that threaten their survival and prosperity.
تو مینیجرز جو ہے ان کو زیادہ یعنی یہ چیز ضروری تھی کہ ان کو شفٹ کرنا تھا اس نئے پیراڈگم یا نئے آئیڈیا کی طرف تاکہ وہ آرگنائزیشنز کو پراپر طریقے سے مینیج کر سکتے اینڈ بیکاز آف دا اناملیز دیٹ تھریٹن دیئر سروائیول اور پراسپیرٹیز اور ایسی چیزیں یہ آڈیٹریز جو ایسی تھیں جو ان کی سروائیول یا ان کی پراسپر ہونے میں ان رکاوٹیں تھیں ان کو بھی انہوں نے مینیج کرنا تھا. So to make this shift, however, they must understand the new paradigm and how it differs from the old paradigm. So obviously یہ shift جب انہوں نے کرنا تھا ایک paradigm سے نئے اس کی طرف replacement stage تھا ایک point of view سے یا ایک way of working سے دوسرے way of working تک جانے کا. So ان کو جو ہے یہ understand کرنا بہت ضروری تھا کہ نیا طریقہ کام کرنے کا وہ پرانے طریقے سے کس طرح سے different تھا. So to initiate this understanding, we will contrast the new but still emerging paradigm with the old paradigm. So اگر ہم اس چیز کو concept کو understand کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہم ابھی یہ دیکھیں گے کہ ابھی بھی still emerge ہو رہا ہے نئی سے نئی چیزیں اور ایجاد ہو رہی ہیں تو ہم نئے والی چیزوں کو old concept کے نئے concept کو old concept کے ساتھ ہم اس کو compare کرتے ہیں اور اس کو ہم we should initiate it, try to understand اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Now, themes of the new paradigm. So, نئے جو paradigm ہے یا نیا جو طریقہ تھا نئے concept جو ہے وہ یہ ہے کہ the differences between the new and old paradigm are organized around 3 themes. So 3 themes کے ارد گرد جو ہے یہ organize ہوا ہے یعنی difference جو ہے نئے اور پرانے concepts کا. پہلا customer value strategy, ٹھیک ہے, cross functional systems and continuous improvement. So پرانے اور نئے اور پرانے میں فرق یہ ہوا کہ اب جو نیا والا ہے اس میں وہ کسٹمر ویلیو اسٹریٹجی چیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کراس فنکشنل سسٹمز دیکھ رہے ہیں اینڈ کنٹینیوس امپروومنٹ کا سسٹم ہے. Now theme 1 we would say the number 1 would be customer value strategy. اب customer value strategy کیا ہے؟ So customer value is defined as the combination of benefits derived from using a product or service and the sacrifices required of the customer. تو کسٹمر ویلیو ہم یہ چیز پہ جج کر سکتے ہیں کہ کسٹمر ویلیو جو ہے وہ آپ اس چیز پہ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہو کہ وہ ایک کمبینیشن ہے بینیفٹس کا ڈرائیوڈ فرام یوزنگ اے پروڈکٹ, ایک پروڈکٹ کو یوز کرنا یا ایک سروس کو یوز کرنے سے, اور اس کی سیکریفائسز جو ریکوائرڈ ہے ایک کسٹمر کی اس میں. Now the customer value strategy is the business plan for offering value for customers. اور یہ customers کو ان کو جو ہے ان کو ویلیو آفر کر رہا ہے. سو کسٹمر ویلیو اسٹریٹجی صرف یہ ایک بزنس پلان کے طور پہ کام کرتا ہے, انکلوڈنگ پروڈکٹ کیریکٹرسٹکس, ایٹریبیوٹس, موڈز آف ڈلیوری, سروس سپورٹ سروسز اینڈ سو آن. سو کسٹمر ویلیو اسٹریٹجی جو ہے یہ بزنس پلان کیسے چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کی کیریکٹرسٹکس, ان کی ایٹریبیوٹس, اس کے جو ہے نا موڈ آف ڈلیوری, اس کے سپورٹ سروسز, وہ سارے کسٹمر نیڈس یا ان کے مطابق یا ان کے لیے ایزیلی اویلیبل ہو اور ان کے یعنی اس مطابق کیریکٹرسٹکس ان کے بلڈ ہوں اور کسٹمر نیڈ اس میں جو ہے نا انکلوڈیڈ ہو. سو دا تھیم آف کسٹمر ویلیو اسٹریٹجی may be addressed in many topics including quality, measurement, positioning, key stakeholder and product design. سو تھیم جو ہے وہ کسٹمر ویلیو اسٹریٹجی کا وہ ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں بہت سارے یعنی ان مینی ٹاپکس, ٹھیک ہے, جس میں کوالٹی انکلوڈ ہو جاتی ہے, میجرمنٹ انکلوڈ ہو جاتی ہے, پوزیشننگ آ جاتی ہے, کی اسٹیک ہولڈرز دیکھتے ہیں اور پھر ہم پروڈکٹ ڈیزائن کو بھی جج کرتے ہیں. Now when we look at the themes of the new paradigm or the new concept, then topics, let's say that if we're speaking about quality, according to quality, the way quality was judged by the old paradigm was that quality meant meeting specifications meet karna, inspected into the product, ٹھیک ہے, products کی inspection, then make trade-offs among quality, cost and schedule, اور پھر trade-offs کرنا. اب new emerging paradigm میں جو ہے یہی چیزیں one component of customer value, ٹھیک ہے, managed into the process, and then seek synergies among quality, cost and schedule.
So those would be, you see how you can judge quality in a different way. So measurement के अगर point of view से हम देखें तो old paradigm would be that the internal measures of efficiency, productivity, cost and profitability, and not necessarily linked to customers. So internal measures आप देख लेते हैं efficiency के measurement अगर आप उसके हिसाब से पुराने concept के हिसाब से देखते हैं पुराने paradigm पे, so उसमें productivity आ जाती है, cost आ जाती है, profitability आ जाती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि customer से linked हो. नए paradigm के मुताबिक जो emerging paradigm है, all measures are linked to customer value. सारे जो है ये measurement के तरीके जो efficiency है, productivity, cost, ये सारे customer value से linked है. अब positioning अगर हम देखते हैं तो according to the old paradigm it was competition, and according to the new paradigm it's the customer segments or the consumer needs. So आप पुराने में सिर्फ जो है concept positioning का वो competition थी, अब customer segments आ गए. अब key stakeholder अगर आप देखते हो उसको जज करना है तो स्टॉक होल्डर या बॉस जो है वो की स्टेक होल्डर होते थे, ठीक है, सिर्फ उनके पास ये नहीं दे हैड द मेजर शेयर्स और द कंट्रोल. अब जो है नए पैराडिगम के हिसाब से द कस्टमर अदर स्टेक होल्डर्स आर बेनिफिशियरीज, ठीक है. मेन जो है वो की स्टेक होल्डर जो होगा वो कस्टमर होगा, लेकिन बाकी जो है वो बेनिफिशियरीज में आएंगे. फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करते हैं ना. प्रोडक्ट डिज़ाइन अगर है तो ओल्ड पैराडिगम के मुताबिक जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन वाज इंटरनल एंड सेल व्हाट वी कैन बिल्ड. सो वो इंटरनली यानी प्रोडक्ट डिज़ाइन जज होता था और उस चीज़ को बेचना जो आप बिल्ड कर सकते थे. अब जो है नए पैराडिगम के अगर हम हिसाब से इसको जज करेंगे तो अब प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है. एक्सटर्नल बिल्ड व्हाट कस्टमर्स नीड. So you see the difference between the old paradigm and the new paradigm. Now product design में पहले जहाँ पे आप internally वो करते थे और आपने जो भी build किया आपने आपका मकसद सिर्फ होता था उसको सेल करना, ठीक है. अब नए पैराडिगम के मुताबिक आप जो है वो एक्सटर्नल हो गया उसका प्रोडक्ट डिज़ाइन और आप वो चीज़ बिल्ड करोगे जो कस्टमर की ज़रूरत है, ना कि आप बिल्ड करके आपको कि बस मैंने उसको बेचना है प्रोडक्ट को. आप कस्टमर के व्यूज़ को यूज़ करते हुए और उसको जज करते हुए आप जो है माइंड में रखते हुए उसके कॉन्सेप्ट को फिर आप अपना प्रोडक्ट बिल्ड करते हो. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट क्वालिटी, now in the old paradigm managers defined quality in terms of meeting specifications. So पुराने concepts के हिसाब से managers जो है वो quality को define करते थे in terms में कि वो specifications को meet कर रहा हो. Quality is assured by weeding out the bad products before they are shipped to customers. So क्वालिटी का मतलब क्या था कि वो ऐसे बैड प्रोडक्ट्स को जो है वो निकाल देते जो बिफोर देयर शिफ्ट, इससे पहले कि वो कस्टमर्स तक पहुंचे वो क्वालिटी जो है बुरे प्रोडक्ट्स निकाल दिए जाते थे. नाउ मैनेजर्स मेक टेक ऑफ्स अमंग क्वालिटी, कॉस्ट एंड scheduling under the assumption that relationships among these outcomes are fixed. So managers पहले जो है उनका ये होता था कि वो bad products जो है को पहले यानी quality sure चेक करते थे कि इससे पहले कि वो कस्टमर को जाए. अब मैनेजर्स नाउ मेक ट्रेड ऑफ्स अमंग क्वालिटी, कॉस्ट एंड स्केड्यूलिंग अंडर द असम्पशन. और मैनेजर्स कई दफ़ा ऐसे यानी ट्रेड कर लेते थे क्वालिटी कॉस्ट क्वालिटी में या कॉस्ट में या स्केड्यूलिंग में, इस असम्पशन में कि उसका एक रिलेशन होता था अमंग के जो आउटकम्स फिक्स्ड हुए थे उनसे. सो बाय कॉन्ट्रास्ट वी वुड से दैट इन द न्यू पैराडिगम मैनेजर्स रिकॉग्नाइज दैट प्रोडक्ट क्वालिटी इज ओनली वन कंपोनेंट of customer value, and managers seek synergies among quality, cost and schedule, not just trade-offs. So अब जो है मैनेजर्स जो है अब नए पैराडिगम के हिसाब से अगर आप देखें तो वो सिर्फ ट्रेड ऑफ्स नहीं ढूंढ रहे हैं, वो उनके बीच में सिनर्जीज जो है वो ढूंढते हैं कि हर मैनेजर का ये कॉन्सेप्ट है कि वो क्वालिटी, कॉस्ट और स्केड्यूल में सिनर्जीज ढूंढे ताकि वो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो सिर्फ एक कंपोनेंट ना रहे, सिर्फ कस्टमर वैल्यू उसका एक कंपोनेंट ना रहे, बट सारी चीज़ें उसमें जो है ना इंक्लूडेड हों. Now for example, improving quality by reducing variation.
سو اگر ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل کہ ہم کوالٹی امپروو کرنا چاہ رہے ہیں بائی ریڈیوسنگ ویریشن ان آؤٹ پٹس دیٹ ریڈیوسز ڈیفیکٹس, reduces cost and makes performance to schedule more predictable. So if we look at, let's say کہ one thing کہ ہم کوالٹی امپروو کرنا چاہ رہے ہیں ویریشنز ریڈیوس کر کے تاکہ جو ہے وہ ڈیفیکٹس ریڈیوس ہو سکیں اور اس سے کاسٹ بھی ریڈیوس ہو obviously, اینڈ میک پرفارمنس ٹو اسکیجول مور پریڈکٹیبل, اور آپ زیادہ پریڈکٹیبل کر سکو یا جج کر سکو کہ ہاں اس طرح پرفارمنس ہوگا. سو further quality is more broadly defined than just product quality. سو اب کوالٹی کو ہم نے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیا, صرف پروڈکٹ کوالٹی کے سے ہٹ کے بھی کوالٹی کو ہم نے ڈیفائن کر دیا. سو کوالٹی اپلائز ٹو ایوری ایسپیکٹ آف دا آرگنائزیشن. سو کوالٹی جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ہر ایسپیکٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. سو اٹ مسٹ بی مینیجڈ انٹو پروسیسز اینڈ سسٹمز اینڈ ناٹ جسٹ انسپیکٹڈ انٹو پروڈکٹس. سو یہ جو ہے یہ مینیج ہونا چاہیے, یعنی اب کوالٹی جو ہے وہ بیسکلی جو ہے نا اٹ شوڈ بی مینیجڈ انٹو دی پروسیسز اور سسٹمز میں بھی مینیج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس جو ہے نا صرف وہ پروڈکٹس کی انسپیکشن نہیں ہونی چاہیے صرف ان پہ, بٹ اس کے پروسیس اور سسٹم میں کوالٹی کا ایک چیک ہونا چاہیے. سو سسٹمز تھنکنگ انکلوڈیڈ think of all interdependent parts of the system into one whole. اور صرف یہ کہ سسٹمز تھنکنگ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہر انٹرڈیپینڈنٹ پارٹ جو ہے وہ ایک سسٹم کا ہول ہو, اس کی طرح اس کو گنا جائے. Now in the old paradigm, اگر ہم پرانے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو measurement systems are focused on internal measures of efficiency, productivity, cost and profitability. So this is the tradition of management by objectives. So managers do not necessarily understand how these internally focused measures are related to customer value. سو پرانے کانسیپٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو میجرمنٹ سسٹمز جو تھے وہ زیادہ انٹرنل میجرز کے اوپر فوکس ہوتے تھے, جس میں ایفیشنسی دیکھی جاتی تھی ورکرز کی یا امپلائیز کی, پروڈکٹیوٹی دیکھی جاتی تھی, کاسٹ اور پروفیٹیبلٹی دیکھی تھی, پروفٹس دیکھتے تھے. نا اب یہ جو ایک ٹریڈیشن تھا مینجمنٹ کا, یہ اس کو ہم مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز کہہ سکتے تھے. نا اس میں مینیجرز کو ضروری نہیں تھا کہ وہ یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے کہ یہ جو میجرز ہیں انٹرنلی فوکس میجرز جو ہیں یہ کسٹمر ویلیو سے کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو نئے پیراڈیگم میں لیکن مینیجرز میں یوز انٹرنلی فوکس میجرز بٹ دے آر لنکڈ ٹو کسٹمر ویلیو ان اے براڈر میجرمنٹ سسٹم. تو نئے پیراڈیگم میں لیکن مینیجرز جو ہے وہ انٹرنلی فوکس میجرز کو جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کسٹمر ویلیو کے ساتھ جو ہے وہ براڈر میجرمنٹ سسٹم کے حساب سے لنکڈ ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ مینیجرز انٹرپریٹ میجرز ان ٹرمز آف دا امپیکٹ آن کسٹمر ویلیو ان دا لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم. اور مینیجرز جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتے ہیں ایسے میجرز کو, ٹھیک ہے, جو ان ٹرمز یہ پہ ہوتے ہیں کہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ کسٹمر ویلیو پہ کیسے آتا ہے لانگ ٹرم میں اور شارٹ ٹرم میں. So in the old paradigm, let's say, managers make strategic positionary decisions based primarily on warfare models on the competition. So اگر پرانے old paradigm کے حساب سے اگر آپ جج کریں تو managers جو ہے وہ strategic پوزیشننگ ایسی کرتے ہیں ڈیسیجنس کی جو زیادہ تر بیسڈ ہوتی ہے وارفیئر ماڈلز پہ کمپٹیشن کی. اب نیو پیراڈیگم کیونکہ ان کو صرف کمپٹیشن کا ڈر ہوتا تھا, ان کو یہ نہیں ایک وہ چیز ہوتی تھی کہ ہم صرف ہماری ساری اسٹریٹجک پوزیشننگ یا ہمارے سارے فیصلے جو ہیں وہ اس بیس پہ ہوں کہ کمپٹیشن میں کیا چل رہا ہے اور ان سے مقابلے میں. اب نیو پیراڈیگم جو ہے وہ مینیجرز میک اسٹریٹجک پوزیشننگ ڈیسیجنز ود فوکس آن مارکیٹ سیگمنٹیشن اینڈ کسٹمر نیڈز اینڈ وانٹس اینڈ ڈیمانڈس. تو اب نئے پیراڈیگم کے حساب سے اگر ہم جج کریں تو مینیجرز جو ہے وہی اسٹریٹجک پوزیشننگ کو جو ہے ڈیسیجنز جو ہے وہ اب فوکس کر رہے ہیں مارکیٹ سیگمنٹیشن کے اوپر اور کسٹمر نیڈز پہ اور ان کی وانٹس اور ڈیمانڈس پہ, ناٹ اونلی جسٹ کہ کمپٹیشن میں کیا چل رہا ہے.
So key stakeholder को अगर हम जज करते हैं, so in the old paradigm, let's say that the key external stakeholder in the stockholder and the key internal stakeholder is one's boss. So ज़्यादा जो है वो स्टेक होल्डर और जो स्टॉक जिसके पास ज़्यादा होता था, स्टॉक होल्डर भी जो होता था वो इंटरनली जो है वो बॉस खुद होता था. Now all other stakeholders such as customers, employees, suppliers and business partners are pawns to serve the goals of the key stakeholders. और एक तरह से सिर्फ जो कस्टमर्स थे पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज़ और सप्लायर्स और बिजनेस पार्टनर्स जो स्टेक होल्डर्स होते थे एक कंपनी में, वो सिर्फ एक तरह से मोहरे होते थे अपने गोल को पहुंचने के लिए. जो मेजर की स्टेक होल्डर्स के जो है ना गोल्स होते थे उनको अचीव करने में हेल्प आउट करते थे सिर्फ ये. अब न्यू पैराडिगम के हिसाब से द की स्टेक होल्डर्स आर कस्टमर्स, both internal and external customers. So अब नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो बॉसेस नहीं हैं बट वो कस्टमर्स हैं, इंटरनली भी जो काम कर रहे हैं और एक्सटर्नली भी जो आ रहे हैं कस्टमर्स. सो प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर्स is the key to serving all other stakeholders over the long term. So providing value जो है कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करना वो एक की है इस चीज़ का कि it's to serving all other stakeholders over the long term, यानी उनको बाकी सबको सर्व करना लॉन्ग टर्म पे. that would be the major factor. अब यानी वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ ज़्यादा उभार के सामने आई है. So in the old paradigm, the product design, अब अगर हम product design की बात करते हैं, so old paradigm, the product design process is internally driven based on the assumption that we know what is best for the customers. Managers enact a push strategy that aims to sell what we can build. So पुराने concept या पुराने paradigm के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन जो था उसकी बेस जो था या उसका प्रोसेस जो था वो इंटरनली ड्रिवन होता था बेस्ड ऑन द असम्पशन के, और इस असम्पशन के ऊपर बेस होता था कि हमें बेहतर पता है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं या कस्टमर को क्या चाहिए. So we know better what is better for the customer. और हमें बेहतर पता है कि कस्टमर को क्या चीज़ें बेहतर हैं या क्या फ़ायदेमंद चीज़ें. So managers एक इस चीज़ को इनैक्ट करते थे, एक पुश स्ट्रैटेजी होती थी कि हम जो भी बना रहे हैं वो हमने सेल करना है. अब नए पैराडिगम के हिसाब से जो है मैनेजर्स डेवलप प्रोडक्ट्स आफ्टर फर्स्ट डिटर्मिनिंग व्हाट कस्टमर्स नीड. और अब जो नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, नए पैराडिगम के हिसाब से मैनेजर्स जो हैं अब वो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं. पहले वो कस्टमर से उनकी नीड्स और उनकी ज़रूरत मालूम करते हैं या मार्केटिंग के थ्रू उनको जज होता है कि उनके कस्टमर की नीड्स क्या हैं और उस हिसाब से फिर वो जो है प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू करते हैं. सो मैनेजर्स बोथ रिएक्ट टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स, ठीक है, in existing markets and actively seek to create new markets and new products. So managers ज़्यादातर जो है वो फिर जो products already हैं उनकी या तो existing marketplace में उनकी improvement के ऊपर काम करते हैं या फिर ये किसी नए product के लिए नई markets जो है वो create करते हैं. So theme 2 would be organizational systems. अब organizational systems को अगर हम जज करें तो organizational systems are the means that provide customer value. Customer value provide करते हैं. So these systems broadly include material and human inputs, process technology, operating methods and work practices. Streams of work activity, information flows and decision making. So अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स को जज करें तो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स जो हैं दे आर द मीन्स दैट प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू. ये वो मीन्स हैं जिससे कस्टमर जो है वैल्यू इंक्रीज होता है. सो दीज सिस्टम्स ब्रॉडली इंक्लूड मटेरियल एंड ह्यूमन इनपुट्स. इन सिस्टम्स में मटेरियल और ह्यूमन इनपुट ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ऑपरेटिंग मेथड्स यूज़ होते हैं and work practices use होते हैं, and streams of work activity especially information flows and decision making ये count होती है. So the approaches to managing these systems in the old and new paradigms are discussed below.
तो इनको किस तरीके से आपने मैनेज करना है ये हम अभी डिस्कस करते हैं. नाउ टॉपिक्स अगर हम देखते हैं तो क्रॉस फंक्शनल अप्रोच. सो क्रॉस फंक्शनल अप्रोच अगर हम जज करें तो ओल्ड पैराडिगम के हिसाब से क्रॉस फंक्शनल अप्रोच जो था वो नेगोशिएशन अक्रॉस फंक्शनल इंटरफेसेस टू ऑब्टेन कोऑपरेशन. न्यू पैराडिगम के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रॉस फंक्शनल सिस्टम्स डिफाइंड, ओन्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड. Then now according to technology अगर हम देखते हैं तो to deal with complexity, to eliminate people problems, तो आप complexity को eliminate करना, people problems को eliminate करना और उनको हल करना था पुराने concept पुराने paradigm के हिसाब से. अब जो है न्यू emerging उसमें जो है to reduce complexity, source of optimization for customer value, और customer value को पे ज़्यादा जोर दिया जाता है. तो employee involvement में जो है पहले focused on hygiene factors, पहले हाइजीन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता था. अब जो है वो इट्स नाउ इन द न्यू इमर्जिंग पैराडिगम इट्स फोकस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स. अब स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है. फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो था रिगार्डेड एज इन स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल हायरिंग, फायरिंग, हैंडलिंग कंप्लेंट्स. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम पहले क्या होता था कि उनकी स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गिनी जाती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन था. अब पर्सनल हायरिंग जो वो कर रहे होते थे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, फायरिंग कर रहे हैं और कंप्लेंट्स को हैंडल करने का. नए पैराडिगम के हिसाब से अब रिगार्डेड एज क्रिटिकल रिसोर्स मैनेज्ड एज सिस्टम इनपुट. Then the role definition of old paradigm was task and job description set limits, कि task और job descriptions जो हैं उनकी वो limit set करते हैं. न्यू emerging paradigm के हिसाब से vision inspires flexibility, और vision जो है वो flexibility को inspire करता है. So culture के हिसाब से अगर हम जज करते हैं तो culture would be that social and emotional issues are suppressed, politics and power dominate. So and नए उसके हिसाब से अगर हम देखें तो connect with individual sense of purpose, emotions and social meaning. So culture जो है पहले old paradigm के हिसाब से emotional issues को suppress किया जाता था, hide किया जाता था, अंदर ही रखा जाता था, political और power dominated होती थी society. अब जो है अगर हम culture judge करें तो वो connect with individual sense of purpose, हर एक का individual sense of purpose क्या है, उनके emotions क्या है और उनका social meaning क्या है, उससे अब वो relate करता है. स्ट्रक्चर जो था, स्ट्रक्चर पहले ओल्ड पैराडिगम के हिसाब से स्पेशलाइजेशन, टॉल हायरार्की विद फंक्शनल एम्फेसिस. ठीक है, स्पेशलाइजेशन होता था, टॉल हायरार्की विद फंक्शनल एम्फेसिस, उनको फंक्शनल एम्फेसिस जोर देते थे ज़्यादा. एंड न्यू के हिसाब से इंटीग्रेशन, फ्लैट हायरार्की विद टीम एम्फेसिस, टीम पे एम्फेसिस किया जाता था. Now the old paradigm does not acknowledge systems that cut across functional or unit boundaries. So cross functional approach अगर हम जज करते हैं तो हम कहते हैं कि the old paradigm does not acknowledge systems, के old paradigm ऐसे systems को acknowledge नहीं करता, ठीक है, जो that cut across functional और unit boundaries, जो unit boundaries को cut across नहीं करेगा या उसको जो है ना फंक्शनल एंड यूनिट बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करता या उसको एक्नॉलेज नहीं करता. सो मैनेजर सिंपली नेगोशिएट अक्रॉस फंक्शनल इंटरफेसेस टू ऑब्टेन मिनिमल कोऑपरेशन, और मैनेजर्स जो है वो ज़्यादातर नेगोशिएट करते हैं फंक्शनल इंटरफेसेस को ताकि वो मिनिमल कोऑपरेशन अचीव कर सकें. सो नए पैराडिगम में मैनेजर्स डिफाइन, own and optimize cross-functional systems for customer value. और नए पैराडिगम के हिसाब से कस्टमर्स जो हैं वो डिफाइन भी करते हैं, ओन भी करते हैं और ऑप्टिमाइज भी करते हैं क्रॉस फंक्शनल सिस्टम्स को कस्टमर वैल्यू के हिसाब से. Now according to technology, अगर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन द ओल्ड पैराडिगम मैनेजर्स यूज टेक्नोलॉजी टू हेल्प देम डील विद द ओवरली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, ठीक है, that have grown up in the organization. So also they use technology to eliminate people problems. Robots don't talk back. So old paradigm के हिसाब से जो है managers जो है वो technology को use करते थे ताकि वो complex systems को deal कर सकें, and that have खास तौर पे organizations में जो grown up हो गए. But technology में जो है they use technology to eliminate people problem, यानी लोगों के problems को
ایک طرح سے کہ لوگ جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں اس کو ریموو کرنے کے لیے ٹیکنالوجیز یوز کی جاتی ہیں, کیونکہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ روبوٹس جو ہے وہ آپ کو واپس جواب نہیں دیں گے. Humans would reply you back or stand up for what they think. So in the new paradigm, managers prefer to eliminate complexity rather than automate it or computerize it. سو نئے پیراڈیگم میں جو مینیجرز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایلیمینیٹ کر دیں کمپلیکسٹی کو, بجائے کہ وہ اس کو کمپیوٹرائز یا آٹومیٹ کر دیں. So managers use technology only to optimize systems for customer value. اور managers جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو صرف یوز کرتے ہیں only to optimize, تاکہ وہ صرف optimize کر سکیں systems کو for customer value. Then employee involvement. اگر آپ employee involvement جج کرتے ہیں, so employee involvement, we would say that in the old paradigm, employee involvement programs are implemented without a focus to contribute to systems. So employee involvement جو ہے وہ programs میں implement اس لیے کی جاتی تھی تاکہ وہ contribute نہ کر سکے systems کو. Employee involvement in improvement programs tend to focus on quality of work-life issues and some limited operational changes. اور امپلائی انوالومنٹ جو ہے وہ امپرومنٹ پروگرامز میں اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو وہ ان کے فوکس زیادہ جو ہے نا وہ کوالٹی آف ورک لائف ایشوز پہ ہوتی ہے, اور سم آر لمیٹڈ آپریشنل چینجز آتے ہیں جن میں. تو ان دا نیو پیراڈیگم ہم یہ جج کرتے ہیں کہ امپلائی انوالومنٹ لیٹس سے از اسٹریٹجکلی فوکسڈ اینڈ کنٹریبیوٹس ٹو سسٹم پرپسز. اور نئے پیراڈیگم کے حساب سے ہم یہ جج کرتے ہیں کہ امپلائی انوالومنٹ جو ہے وہ اسٹریٹجکلی فوکس کر رہی ہے اینڈ کنٹریبیوٹنگ ٹو سسٹم پرپسز, اور سسٹم پرپسز کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اور اس کے اوپر اسٹریٹجکلی فوکس کر رہا ہے. So when we speak about human resource management, human resource management in the old paradigm, managers regard human resource management HRM as a staff responsibility. So پہلے جو ہے نا management جو ہے اس کو وہ staff responsibility کے طور پہ لیتے تھے. So HR specialists process paperwork to hire and fire and handle personal complaints. یعنی ایچ آر کے اسپیشلسٹ ایسے ہوتے تھے جو پیپر ورک ہینڈل کرتے تھے جس میں ہائرنگ اور فائرنگ ہوتی تھی لوگوں کی, امپلائیز کی, یا ان کے پرسنل کمپلینٹس کو جج کرتے تھے. Now in the new paradigm, line managers regard human resources as critical resources and strategically manage them as inputs to systems. So نئے پیراڈیگم کے حساب سے اگر ہم جج کرتے ہیں تو لائن مینیجرز جو ہے they regard human resources, وہ human resources کو ایسے ریگارڈ کرتے ہیں کہ critical resources سے ریلیٹ کر کے, اور strategically manage کرتے ہیں ان کو as inputs to systems. Now in the old paradigm, ہم رول ڈیفینیشن اگر دیکھتے ہیں تو اولڈ پیراڈیگم میں مینیجرز یوز ٹاسک اینڈ جاب ڈسکرپشنز ٹو پرسکرائب اینڈ سیٹ لمٹس ٹو پرسنل رسپانسبلٹیز, اپنے پرسنل رسپانسبلٹیز کی بیس پہ. ناؤ دا نیو پیراڈیگم مینیجرز کنوے اے ویژن ٹو لیڈ اینڈ انسپائر فلیکسیبلٹی. اور نئے پیراڈیگم کے حساب سے رول ڈیفینیشن میں مینیجرز جو ہے وہ ایک ویژن کریٹ کرتے ہیں لیڈ کرنے کا, انسپائر کرنے کا, فلیکسیبل ہونے کے لیے. اینڈ امپلائیز پارٹیسپیٹ in any activities required to provide superior value to the customers. اور employees جو ہے وہ ایسے participate کرتے ہیں کسی بھی activities میں ایسی جن سے جو ہے وہ superior value جو ہے وہ to customers provide ہو سکے. Now, according to the culture, if we judge culture, now in the old paradigm, managers suppress social and emotional issues that are regarded as irrational and sources of distraction away from goals and objectives. سو اولڈ پیراڈیگم کے حساب سے ہم اگر جج کریں تو مینیجرز جو ہے وہ سپریس کر رہے ہیں سوشل اینڈ اموشنل ایشوز کو, ٹھیک ہے, اینڈ دیر آر ریگارڈیڈ جو ہے ایز ارریشنل, یعنی ان کو ارریشنل سمجھا جاتا ہے, اینڈ سورسز آف ڈسٹریکشن ان کو سمجھا جاتا ہے اپنے گولز اور آبجیکٹیو سے ڈسٹریکٹ کرنا سمجھتے ہیں کہ اولڈ پیراڈیگم کے حساب سے. اینڈ پاور اینڈ پالیٹکس جو ہے وہ کلچر کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, دے ڈومینیٹ دا کلچر وتھ انڈیویجولز جاکینگ
for personal gain, और individuals उसमें जो है वो अपने personal gain के लिए ज़्यादा जो है ना काम कर रहे होते, तो power and politics ज़्यादा major culture में role play करते थे. अब नए paradigm के हिसाब से managers connect organizational mission and purpose with each individual sense of purpose, emotions and social meaning. So हर एक के individual social meaning, emotion and purposes के साथ managers उनको जो है ना उनका organizational mission जो है ना वो और purpose connect कर देते हैं. Individuals channel their needs for pride in workmanship towards strategic purposes. So अब individuals जो है वो अपने needs जो है pride के वो अपने workmanship की तरफ उन्होंने उसको दे दिया, बजाय के personal gain से वो देखें, वो strategic purposes complete करने के लिए जज करते हैं. So structure अगर हम देखते हैं, so in the old paradigm organizational structure is based on specialization of tasks. So old paradigm के हिसाब से जो है ना organizational structure जो है वो specialization of task के ऊपर base होती है. So the hierarchy is tall and with many levels of managers, and it emphasizes functional lines of authority. और obviously वो बहुत जो higher authorities हैं वो higher levels पे जो है ना many levels of managers हैं उनमें अब, और हर level जो है वो emphasize कर रहा होता है अपनी functional lines अपनी authority की, उसको वो point out कर रहा होता है. So in the new paradigm the hierarchy is flat with fewer levels of managers, and it emphasizes teamwork to serve superordinate objectives. और नए पैराडिगम के हिसाब से जो है वो hierarchy जो है ना वो फ्लैट हो जाती है, कम लेवल बन जाते हैं मैनेजर्स के, जिसमें वो जो है ना टीम वर्क एम्फसाइज करते हैं और सुपरऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना वो सर्व करने के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं. सो इफ़ वी स्पीक अबाउट Theme 3, now continuous improvement to keep pace with the changes in the external environment. Now अगर हमने वो pace रखनी है external changes के साथ जो external environment में चल रही हैं, managers have to change the organization. Managers को organization change करने की ज़रूरत होती है. So managers have always made improvements, however with rates of change increasing in the external environment. So मैनेजर्स को जो है वो हमेशा इम्प्रूवमेंट सब करने की ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पे जो है ना विद रेट्स ऑफ चेंज इंक्रीजिंग, ख़ासतौर पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो रेट्स ऑफ चेंज जो है जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं. सो मैनेजर्स मस्ट इम्प्रूव डिफरेंटली एंड मोर फ्रीक्वेंटली दैन इन द पास्ट. और मैनेजर्स को अब ज़्यादा डिफरेंट तरीके से और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आनी है, चेंजिंग लेके आनी है निस्बतन जिस तरह वो पास्ट में करते थे. सो दे मस्ट परस्यू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट विच इज़ अ constant striving to change and make things better. और उनको जो है वो परस्यू करना है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके आनी है, जिससे जो है वो constant striving की तरफ जा सकते हैं ताकि वो चेंज कर सकें एंड चीज़ों को बेहतर कर सकें. Now, if we speak about topics in the theme 3, continuous improvement, occasion के हिसाब से old paradigm, new focus new product development, episodic, reactive to problems, big breakthroughs only. So new paradigm says that focused on broader systems, unending, proactive to opportunities, big breakthroughs and small steps. So पुराने हिसाब से वो episodic, reactive to problems से सिर्फ, अब जो है वो अनएंडिंग प्रोएक्टिव है अपॉर्चुनिटीज के लिए, एंड दे टेक बिगर ब्रेक थ्रूज एंड स्मॉल स्टेप्स. पहले सिर्फ बिग ब्रेक थ्रूज होते थे, स्टेप्स नहीं लेते थे. अप्रोच जो है ट्रायल एंड एरर होता था पहले, तो अब जो है वो साइंटिफिक मेथड है. The approach, if we say वो पहले old paradigm के हिसाब से सिर्फ trial and error, now it's more scientific method. Response to error would be punish, fear, cover up, seek people, fix, or employees are responsible. Response to error हम वो उस वक्त punish करते थे, या लोगों में एक डर यानी create होता था, ये cover up करते थे, या employees को responsible ठहराते थे management जो है. अब नए paradigm के हिसाब से learning, openness, seek, process, system fix, management is responsible. अब वो management responsible है. So decision making perspective, individual political expediency
short term पहले होती थी, now it's strategic long term purposeful for the organization. फिर managerial roles जो थे वो पहले जो है administer and maintain status quo and control over others, अब जो है वो challenge status quo, prompt strategic improvement. So अब strategic improvement की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और control issues अब जो है ना वो कम है. So authority में अगर हम पहले देखते हैं तो old paradigm के हिसाब से top driven via rules and policies, टॉप ड्रिवन होता था, ठीक है, चाहे रूल्स और पॉलिसीज के मुताबिक. अब जो है न्यू मर्जिंग न्यू पैराडिगम के हिसाब से इट्स कस्टमर ड्रिवन, ठीक है, एंड थ्रू विजन एनेबलमेंट एंड एम्पावरमेंट. सो विजन एनेबलमेंट और एम्पावरमेंट के जरिए होता था. सो फोकस नेक्स्ट इफ यू think about it, business results through quotas and targets. quotas and targets के हिसाब से business results देखते थे. अब जो है business results like through capable systems means tied to results. Control अगर हम जज करते हैं तो control scoring, reporting और evaluating. Statistical study of a variation to understand causes, वो अब नया paradigm है. So means अगर हम जज करते हैं तो हम कहते हैं delegated by managers to staff and subordinates, and according to the new paradigm it's owned by managers who lead staff and subordinates. Okay students, that is all for today. We will continue to study about theme 3, continuous improvement, in our next lecture, in which we will go over these topics in detail, discussing the old paradigm and the new paradigm of the occasion, approach, response to error, decision making perspective, managerial roles, authority, focus, control and means. So we'll discuss all of those and explain them in detail. Thank you.